personal finance segment. Our guest today is Hemant Rustagi of Wiseinvest, and our first caller is Seema Banda, who calls in from Uttar Pradesh. Hi, Seema. हेलो Hello. What's your question? मेरा क्वेश्चन ये SIP में इन्वेस्टमेंट के लिए था. अच्छा. उसी के लिए पूछना था मुझको. 18 इयर्स में हाँ. मिनिमम 15 लाख. अच्छा. और आप हर महीना कितना डाल सकते हैं? हम गैस से पूछेंगे कि कितना लगेगा. 4,000. और आपके अभी भी इंश्योरेंस या कुछ है? हाँ, इंश्योरेंस है मेरे पास. जीवन सुरभि है और भी इंश्योरेंस है, PLI वगैरह भी है. अच्छा, ठीक है. हेमंत, डिटेल्स मैंने कल बता दिया था. एक दिन फोन आया था. अच्छा. हेमंत, आप क्या एडवाइस देंगे सीमा के लिए? सीमा, क्योंकि आपको करीब 18 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करना है और आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी शायद कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, जैसा आपने इन्फॉर्मेशन दिया है HDFC इक्विटी फंड में, वहाँ पे आपने शायद एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है. तो क्योंकि आपको हर महीने इन्वेस्ट करना है 4,000 रुपये, और 18 साल के लिए जब इन्वेस्ट करेंगे, एक आपका कॉर्पस एक आपके माइंड में है 15 लाख का आपने कहा, तो जब भी आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोशिश कीजिए, क्योंकि आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी समय है आपके पास, तो इक्विटी फंड जो हैं वो बिल्कुल सही रहते हैं, क्योंकि इतने लंबे समय में आपको इन्फ्लेशन को बीट करने की ज़रूरत है. तो एक फंड तो आपके पास ऑलरेडी है जहां पे आपने लमसम इन्वेस्ट किया है, उसी में आप 2,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बाकी के जो 2,000 हैं वो आप या तो एक ICICI फोकस ब्लू चिप है जो एक लार्ज कैप फंड है, उसको देख सकते हैं, या फिर IDFC प्रीमियर इक्विटी जो है एक मिड कैप फंड है. अब क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, मुझे लगता है ये सही रहेगा कि एक मल्टी कैप और एक लार्ज कैप फंड, इन दोनों फंड में 2,000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए. ऑफ कोर्स इस बात का ध्यान रखिए कि काफ़ी समय ऐसा होगा मार्केट में, काफ़ी उतार चढ़ाव होंगे, वॉलेटिलिटी होगी, तो इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू कीजिए. यहाँ पे अगर आप 18 साल इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, मैं मान के चलूँ कि आपको 12% का एनुअलाइज रिटर्न मिले, तो आप करीब 28 लाख का कॉर्पस आप बना पाएंगे, जो आपके जो टारगेट है उससे काफ़ी ज़्यादा है. All right. Thanks a lot for that, Hemant. The next caller has chosen to write it in the form of an SMS. This comes from Praveen Kumar from Bangalore. He says he can invest 25,000 a month, so an upmarket investor, and he's asking how he should allocate his money. Don't have much more details, but I guess he's asking for the most profitable way to allocate his money. Yes, I mean, what is the time horizon here, Lata? Has he mentioned anything? Hemant, he's mentioned a time horizon of about 20 years, and he's also indicated a goal of 5 crores. Yeah, okay. For a time horizon of 20 years, as I just mentioned, obviously the focus has to be on equity fund. Yes, equity as an asset class tend to be volatile in short term and medium term, but the fact is that when you're investing on a systematic basis, but through SIP, the volatility is automatically taken care of. So for 25,000 rupees, I'm recommending 3 funds to him. One is HDFC equity, wherein he can invest around 9,000 rupees, and then which is a multi-cap fund. Then ICICI Focus Blue Chip, which is a pure large cap fund, he can invest 8,000 rupees, and then he can also take a mid-cap fund, quality mid-cap fund, which is IDFC Premier Equity. Here again he can invest around 8,000 rupees. So in all, 3 funds for 25,000, a good mix of large cap, mid-cap, and a multi-cap fund. Here again, if I assume a return of 12% over this time horizon of 20 years, he can actually build a corpus of around 2.27 crore. But since Praveen's target is around 5 crore, if he wants to achieve that during this time horizon, then he will have to invest around 55,000 rupees per month. With 25, he can only achieve 2.27. So my advice to him would be that if he has only 25,000 to invest per month, he should start the process. Don't delay the process, because equity works well. The more time you give equity, the better results you get, and power of compounding also works over time. So begin with 25,000 rupees. As and when it is possible for him to add more amount, he should start investing more money. Okay, but I have a question. This is more for the very, very short term, and really to dovetail to the theme of the last few days, where we have seen bond yields shooting up. Any advice to investors, Hemant, on how they can take advantage? What are the kind of mutual funds they can invest in to take advantage of high yields? Well, Lata, I think the thing is that in debt funds, especially because the way we have seen yield moving up, the key factor is the time horizon.
if someone is investing for a short term, my recommendation would be again looking at ultra short term. If the time horizon is 3 to 6 months, I think there investors can good return. 6 months to 1 year, again look at short term fund. But if it is for a longer term, then I would say maybe they can look at fixed maturity plans. At this stage, if investors are not very sure about their time horizon, I think they should avoid income fund at least. All right. Fair point. Hemant Rustagi, thank you very much for joining us with your advice for these various questions.